Well, what's up, guys? This is Wicked Jain VJ, a speaker, a host, and a critic, dancer, and also a history teacher. From the previous episode, as I mentioned, that we are going to discuss about some promises. Yes, we are going to discuss about the famous promise by King Dashrath in the entire story of Ramayan. Ramayan की basic story तो सबको पता है, but my concern is a bit different here. अब रामायण की स्टोरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग रामायण इज अ स्टोरी ऑफ सैक्रिफाइसेस. अ ब्रदर सैक्रिफाइसिंग फॉर हिज ब्रदर, अ सन सैक्रिफाइसिंग फॉर हिज फादर, एन एनिमल सैक्रिफाइसिंग हिमसेल्फ फॉर द ग्रेटर कॉज एक्सेट्रा. सो आउट ऑफ सो मेनी सैक्रिफाइसेस, who made the biggest and the most difficult sacrifice in the entire Ramayana is my topic of discussion. अपने को पता है रामायण में जब वनवास के लिए भेजा जाता है तो यू हैड राम, सीता एंड लक्ष्मण गोइंग इनटू एक्साइल. छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पे व्हेन राम वन सीता इन स्वयंवर, राम के थे 3 भाई और सीता की थी 3 बहनें, और इन सब की शादी यहाँ पे एक साथ हो जाती है. वाई? Cost cutting. So when you talk about what happened to them during the exile, यहाँ पे Shatrugna was with his wife during the exile and he actually technically took care of the entire kingdom because Bharat, as per the famous story, जैसे हमको पता है कि भरत ने यहाँ पे राम के पादुका वहाँ पे थ्रोन पे रख के बोला था कि I am not worthy, so I will place this here and I will look after the administration. He technically did not take care of the administration. Bharat and his wife were settled down at the outskirts of the main city और वहीं से वो लोग बातें करते थे. मेन ट्रांजैक्शन तो शत्रुघ्न और उनकी बीवी देख रहे थे. What happened with the wife of Lakshman is the story of our main discussion today. Lakshman ki wife was Urmila, who was supposed to be one of the most beautiful women of that times. She was basically a very bubbly, very happy, very chubby character जो हमेशा बहुत खुश रहती थी, हमेशा बहुत हाइपर एक्टिव रहती थी और बहुत टैलेंटेड थी. एंड शी वॉज अ वेरी गुड पेंटर ऑल्सो अपेरेंटली. बट अनफॉर्चुनेटली जितने भी वर्जन ऑफ रामायण अवेलेबल है, बी इट वाल्मीकि रामायण, बी इट हनुमान रामायण, बी इट तुलसीदास रामायण, बहुत सारे रामायण को एड्रेस करने के बाद भी दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज नॉट वेल डिफाइंड, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. नाउ व्हेन राम डिसाइड्स टू गो टू एक्साइल, Lakshman also decides to go to exile, and when Lakshman breaks this news in front of his wife, यहाँ पे 2 वर्जन निकलते हैं स्टोरी के. एक वर्जन ये है जहाँ पे उर्मिला बोलती है कि लक्ष्मण मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, बट लक्ष्मण इज लाइक नो, यू हैव टू स्टे बैक, यू हैव टू टेक केयर ऑफ माय इन लॉज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इन लॉज टेक्निकली एक्सेट्रा. ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे एक और स्टोरी जाता है जहाँ पे व्हेन लक्ष्मण बोलता है उर्मिला को कि यहाँ पे कि नो यू आर नॉट सपोज टू कम विथ मी करके, उर्मिला जानबूझ के उससे झगड़ा करती है एंड शी ट्राइज टू पुट ऑन सम इंसल्टिंग वर्ड्स ऑन लक्ष्मण, बिकॉज लक्ष्मण वाज अ कैरेक्टर जो बहुत गुस्से वाला था, उसको बहुत जल्दी फटाक से गुस्सा आता था, और लक्ष्मण गुस्सा होके बोलता है कि यार तुमसे बात ही नहीं करना मुझे, और निकल जाता है. अब दिस वॉज पर्पसली डन बाय उर्मिला बिकॉज शी न्यू कि लक्ष्मण इज गोइंग टू प्रोटेक्ट राम एंड सीता इन द फॉरेस्ट, एंड शी वॉन्टेड लक्ष्मण का 100% कॉन्सेंट्रेशन ऑन राम एंड सीता. अगर वो मेरे बारे में सोचेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हो जाएगा एंड ही विल नॉट बी एबल टू फुलफिल हिज ड्यूटीज प्रॉपरली. अलग लेवल का थिंकिंग था. एनीवेज, इवन दिस वॉज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज Lakshman when he is inside the jungle protecting Sita and Ram, right? The first 13 years of the entire exile was very very simple. वो बहुत chill थे. रामायण को जो पूरा एपिसोड है, किडनैपिंग ऑफ सीता, बैटल बिटवीन राम एंड रावण, दिस हैपेंस टेक्निकली इन द लास्ट ईयर ऑफ द एक्साइल. स्टार्टिंग के 13 साल काफी चिल था यहाँ पे, बट ड्यूरिंग दोस 13 years द मेन रीजन वाई लक्ष्मण accompanied them was कि मैं राम और सीता का प्रोटेक्शन करेगा, मैं उनको यहाँ पे सेवा करेगा. सो लक्ष्मण ने शपथ लिया था कि कुछ भी हो मैं सोऊंगा नहीं. लक्ष्मण डिसाइडेड कि आई विल नॉट स्लीप एंड आई विल प्रोटेक्ट देम. सो व्हेन वन फाइन नाइट व्हेन लक्ष्मण वाज ट्राइंग टू गार्ड देम, उसको बेचारे को हल्का हल्का नींद आ रहा था, बट ही वाज ट्राइंग टू स्टे अवेक, एंड सडनली देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिटी वुमन इन फ्रंट ऑफ हिम हु इज बेसिकली मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉडेस ऑफ स्लीप, द निद्रा देवी. तो निद्रा देवी इज लाइक लक्ष्मण तेरे को सोना पड़ेगा, यू कांट स्टे अवेक, नो ह्यूमन कैन डू दैट. तो लक्ष्मण इज बेसिक लाइक मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पे नहीं सोएगा बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट एंड नो मैटर वॉट आई विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग दैट आई हैव. तो यहाँ पे निद्रा देवी गोज बेसिकली लाइक आई हैव अ बार्गेन, सो आई विल ग्रांट यू अ बून कि तुम नहीं सोगे, तुमको नींद ही नहीं आएगा 14 साल के लिए, यू कैन स्टे अवेक नॉन स्टॉप, बट तुम्हारे बदले में किसी और को सोना पड़ेगा यहाँ पे. सो लक्ष्मण वॉज लाइक ओके, गो टॉक टू माई वाइफ, उसको पूछ के देखो. So Nidra Devi goes to Urmila and then she narrates her the entire story. Without even a single minute
of hesitation. Urmila is like, okay, I'm ready to sleep. उसके बदले में मेरे को सुला दो. So it was, bargain was basically like, जो तुम्हारा share of sleep है वो किसी और को सोना पड़ेगा. So technically Urmila had to sleep the like her own share का sleep and also Laxman का share का sleep. So technically Urmila had to sleep for the entire day. This was the condition. And this condition was gladly accepted by Urmila, saying that my husband has to perform his duties towards Ram, and there can be no other greater happiness than my husband's happiness, and my husband's happiness is in his duties that he performs towards Ram, and I cannot let his happiness go in vain. तो मैं सो जाऊंगी करके. And for the next 14 years Urmila goes into deep sleep. 14 साल के लिए उर्मिला यहाँ पे सो जाती है. अब we come to think, what's the big deal? Imagine someone going to sleep for the 14 years. They are aging for the next 14 years. उनके mental, emotional, physical changes are happening for the 14 years. एक इंसान के अंदर जो इच्छाएं होती है, जो आकांक्षाएं होती है, they all are age bound. For example, if today you are thinking that you want to do something, after the next 5 years you may not think of that thing, no matter how passionate you are about that particular thing today. And this person did not just agree to sleep for the 14 years. This person agreed to sacrifice all her passions, sacrifice all her wishes, sacrifice everything for the next 14 years by doing nothing and just going into deep sleep. So that was the level of sacrifice she did for her husband and for the greater good of everyone. Apart from this, how this entire thing fell into play is very beautiful. अब जो फाइनल बैटल होता है, द ग्रैंड फिनाले बिटवीन राम्स आर्मी एंड रावण's आर्मी, रावण के आर्मी में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन वाज इंद्रजित, हु वाज योर रावण का बेटा. एंड टेक्निकली उसके पास मिस्टिकल पावर्स थे एंड ही हैड लॉट ऑफ वेपन्स एंड ही वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. अब इंद्रजित वाज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर और उसने यहाँ पे जब वरदान मांगा था ब्रह्म जी से. अब एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, ब्रह्मदेव सबको वरदान क्यों देते हैं. Indrajith had asked for the boon of immortality, अमर होने की. But Brahmadev was a bit sensible. He was like, भाई इतना नहीं चलेगा, थोड़ा डिस्काउंट कर. So then after the bargain, ब्रह्मदेव ने उसको एक वरदान दिया था कि no mere human being can kill you. Only a person who has overcome sleep, a person who has sacrificed sleep, a person who has defeated sleep can kill you. In short, जो इंसान 12 साल तक नहीं सोया रहेगा वो इंसान ही तुमको मार सकता है, which was technically impossible. And as you can imagine, in the final battle, it is Lakshman who kills Indrajith because he had not slept for the 14 years already. And that is how all the things fall at place at their respective timing. Indrajith was so powerful कि technically उसने एक ही weapon से 67 million members of the वानर सेना को एक साथ मार दिया था. Even Hitler felt ashamed of हिटलर को भी एक टाइम पे कॉम्प्लेक्स हो गया कि यार ये तो मेरे से भी खतरनाक है करके. एंड इट इज लक्ष्मण हु किल्स हिम बिकॉज इफ Indrajith would not have died, Ravan's army would have still continued, because only after the death of Kumbhakaran and Indrajith, Ravan decides कि वो अभी खुद यहाँ पे बैटल में कूदेगा करके. After the entire Ramayan का episode, the kidnapping का episode, when Ram goes back to Ayodhya and he is once again coronated, यहाँ पे Urmila wakes up from her sleep and there is this very beautiful description of the author. Of one of the authors who describes Ramayan from Urmila's perspective, कि she wakes up and she is very happy to see कि Ram is getting coronated and जो सबको चाहिए था वही हो रहा है करके. But suddenly Lakshman starts laughing और पब्लिक को लगता है कि लक्ष्मण पागल हो गया क्या. But technically this was the bargain कि after 14 years Lakshman will go to sleep. अब technically ये address नहीं किया गया कि Lakshman slept for how many days or whatever. But the wife could not spend the quality time with the husband that she was supposed to. एक महारानी जिसने बहुत सारी चीजें हैप्पी मैरिड लाइफ इमेजिन किया था, उसका हैप्पी मैरिड लाइफ हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया. And that too because of one promise that his father-in-law made when something happened. That's why people always say you should not promise whenever you are emotionally high. Like आप बहुत खुश हो या आप बहुत सारा, आप कभी promise नहीं करना चाहिए because you don't know what exactly you are promising for, right? That's why you should always keep things in mind and should never forget things. अच्छा, forgetting से याद आया यहाँ पे, there was a time in Mahabharata when Arjun happens to forget a lot of stuff, जिसकी वजह से अर्जुन और उसका बेटा बैटल फील्ड में आमने सामने आते हैं एंड जहाँ पे
अर्जुन का बेटा ऑलमोस्ट ओवर पावर्स अर्जुन एंड टेक्निकली किल्स अर्जुन एंड देन अर्जुन इज रिवाइव्ड बैक. एंड दिस बेटे से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अभिमन्यु, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज अदर सन. अब ये अलग सन कौन था जिसने अर्जुन को ही मार दिया एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून्ड.